Hello students, again welcome in the next video of wave optics. अब तक हमने जो सीखा उसमें से the most important thing is light is made up of waves. So wave nature of light we have studied. So number of theories given by number of scientists like Newton's corpuscular theory, Huygens wave theory, Maxwell's electromagnetic theory we have studied now. After that we have studied about the polarization, then polarization by reflection. So polarization by reflection and the relationship between refractive index and the angle of polarization we have studied. Now let's move towards the polarization by scattering. Now see, scattering, you know what happens when anything gets stuck in between, or that that molecule or that element get scattered. Now say, when sunlight strikes air molecule or dust particle in the atmosphere, it changes its direction. This is called as scattering. Now we see the sky as blue because of this scattering, as blue light is preferentially scattered. If there were no scattering, the sky would appear dark to us, as long as we do not directly look at the sun and we could see stars even during the day. Now when sunlight is scattered, it gets partially polarized in ways similar to the reflected light. The degree of polarization depends on the angle of scattering, the angle between the direction of light incident on the molecule or dust particle and the direction of scattered light. If this angle is 90 degree, the scattered light is plane polarized. Thus the scattered light reaching us from different direction in the sky is polarized to different degrees. Now what will exactly happen in scattering? Now see, the scattering of light of air molecule produces linearly polarized light in the plane perpendicular to the incident light. Therefore, at 90 degree away from the beam direction, the scattered light is linearly polarized. Now see, this is the scattered beams. This is the scattering center. This is the unpolarized incident beam, and just because of this scattering, these scattered beams are here. Okay. Then moving towards, now the next concept we are going to understand here is interference. Interference मतलब आपको पता है, interfere करना. We always use this word in day to day life. But here interference has the different meaning in physics. Now what will happen when two waves get interfere with each other? Now an important characteristic of light waves is their ability under certain circumstances is the important word here, because only some conditions will satisfy, then wave can interfere with each other, to interfere with one another. Now, the most people observe some type of optical interference every day, but do not realize what is occurring due to produce the phenomena. अब हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं that occurs due to interference, हमें पता नहीं है, that's why हम उसको notice नहीं कर पाते. So another example is, now see, bubble illustrated in this figure. This is the bubble and this is the actual picture. That's why it is so much clear. Okay. See the variety of beautiful colors. So bubble. This is due to interference of waves. What does exactly happens in interference? When two light waves from different coherent sources. Now see, coherent is the most important word here. Coherence means the light having single wavelength or same wavelength. Means ऐसा नहीं कि एक कोई अलग wavelength का light है और कोई दूसरे wavelength का light है, तो interference cannot happen there. So it is important the light should be coherent, coming from the coherent sources.
Then the distribution of energy due to one wave is distributed by the another. This modification in the distribution of light energy due to superposition of two light waves is called as interference. Now see, in interference, last to last video we have seen about the superposition of two waves. As we know, the statement of superposition of wave is when two or more wave traveling through a medium and arrive at a point simultaneously, each wave produce its own displacement, right? Independently of others. Therefore, the resultant displacement at that point, at that instant, is the vector sum of the individual displacement made by their two waves. Okay? So this is just about the principle of superposition. When we need to understand the interference, we should know this superposition. Okay, now interference. Consider two light waves, okay? And these two light waves will have same amplitude, same wavelength and frequency starting from the same phase, okay? Suppose these waves arrive at a point at the same time. If the displacement due to these two waves meeting at the point are in the same phase, the resultant displacement at that point is maximum. अगर वो same phase में मतलब टू वेव्स जैसे आ रहे हैं, अगर वो सेम फेज में एक साथ इंटरफेयर होते हैं, देन वी विल गिव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर ये आउट ऑफ फेज होते हैं तो वी विल गेट द मिनिमम amplitude. Okay, if two waves meets out of phase, the resultant amplitude will be 0. Okay, now this intensity at that point will be 0. मतलब देखिए, अगर इन फेज में होता है इंटरफेरेंस, then resultant amplitude will be maximum and intensity also maximum at that point. Okay, if the interference occur out of phase, the amplitude will be negligible or minimum, but the intensity will be 0. Okay, now see the phenomena of enhancement, increment or cancellation of the displacement at a point due to superposition of two waves or two identical light waves is called as interference of light. Okay, now let's see here in this diagram, this is the laser light. Why we use laser light? Because this will have the light of single frequency. Okay, now this laser light is allowed to pass through this slit. Now this slit is having two holes. Okay, this one hole and two holes. Why we are using this? Why we are doing this? Because we want two waves coming और आइडेंटिकल वेव्स. ओके, टू आइडेंटिकल वेव्स. और आइडेंटिकल वेव्स कैसे मिलेंगे? दो डिफरेंट सोर्सेस को यूज करने से अच्छा है चलो एक को ही यूज करें और हम उसको ऐसे कन्वर्ट करें. देखिए, टू सोर्सेस में हमने कन्वर्ट किया, मतलब अब हमें आइडेंटिकल वेव्स भी मिल रही है, सिंगल वेवलेंथ है, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी भी कॉमन होगी, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा. मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू सोर्सेस, अगर टू अदर सोर्सेस और टू डिफरेंट सोर्सेस यूज हमने किए तो हो सकता है थोड़ा बहुत वेवलेंथ का फर्क आ जाए या फिर एम्पलीट्यूड का फर्क आ जाए. तो बेटर वे चलो एक को यूज करते हैं और उसको टू में कन्वर्ट कर देते हैं. अब देखिए यहाँ पे टू डिफरेंट वेव्स, दे आर इंटरफेयरिंग. ये देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे है. अब ये जब इंटरफेयर कर रहे हैं तो ये देखिए इसका कुछ रिफ्लेक्शन या शैडो जो कुछ होगा वो यहाँ पे हमको एक पैटर्न जैसा मिलेगा. लेट्स स्टडी इसके बाद क्या होगा. सी द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स. क्या हो रहा है? ये S1 है, दिस इज सोर्स 1 एंड दिस इज सोर्स 2. अब ये यहाँ से कुछ वेव्स आ रहे हैं, ये देखिए ये वेव्स है, इससे वेव्स आ रहे हैं. क्या हो रहा है? ये यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है. अब कुछ इंटरफेरेंस जो है वो मैंने जैसे बोला कि इंटेंसिटी हाई होगी, डिस्प्लेसमेंट हाई होगा, इंटेंसिटी लो होगी, एम्पलीट्यूड लो होगा. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देखिए, अगर ये वेव जो डॉटेड लाइन में दिख रही है और ये भी डॉटेड लाइन में है, अगर ये डॉटेड और डॉटेड दे गेट इंटरफेयर, वी आर हैविंग दिस ब्लू डॉट हियर. इफ सी सॉलिड लाइन एंड दिस सॉलिड लाइन, solid line from S1 and solid line from S2, they are interfering, they are giving us again the blue point. But see, when one dotted line and one
दिस ब्लू सॉरी द डॉटेड लाइन एंड द सॉलिड लाइन, जैसे ये दोनों यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मिल रहा है रेड डॉट। अब ये सारी चीजें हमको विजुअलाइज नहीं होगी, इट इज जस्ट द इमेजिनेशन वी नीड टू डू हियर। सी अगर ये वेव्स मतलब अगर ये लाइन है, ये लाइन मतलब ये वेव्स है, ये आउट ऑफ फेज और इन फेज ऐसे है। अगर आप देख रहे हो कुछ हमें रेड डॉट मिल रहा है, कुछ हमें ब्लू डॉट मिल रहा है। ब्लू कब मिलेंगे? व्हेन दो सॉलिड लाइन या फिर दोनों ही डॉटेड लाइन अगर इंटरफेयर हो रहे हैं। ये सॉलिड और डॉटेड का मतलब क्या है? दे आर इन फेज और दे आर इन नॉट इन फेज, मतलब they are showing the differences between two waves, it is just to show the difference। ये रेड डॉट और ये ब्लू डॉट मतलब इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, दे गेट इंटरफेयर विद ईच अदर and we get the minimum intensity और zero intensity point। अब intensity zero है मतलब वहां पे क्या होगा? डार्कनेस होगा। और यहाँ पे intensity हाई है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? वेव्स वहां पे जो simultaneously the waves are arriving, they are in phase, they get interfere and they produces the maximum displacement, therefore the intensity is very much higher, okay, in that case। So these are the two types of interference, constructive interference and destructive interference। Now let's see the first type, constructive interference। If the crest of one of the wave coincide with the crest of other wave, the amplitude are additive। Obviously what I said, the in phase or out of phase means if crest is overlapping with crest, then the maximum will be additive। Now see this, suppose this is the first wave, okay, and this is the second wave। देखिए अगर ये एक है एम्पलीट्यूड के साथ और एक दूसरी वेवलेंथ है इस एम्पलीट्यूड के साथ, अगर ये दोनों ऐड किए जाए तो हमें एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिलेगा। अगर ये दोनों यहाँ पे ऐड कर जाए तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर इंटरफेरेंस हो रहा है जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे क्या होगा? ट्रफ गेट इंटरफेयर विद ट्रफ और क्रेस्ट गेट इंटरफेयर विद क्रेस्ट, ओके। In this case, the amplitude of these both waves are equal. The resultant amplitude will be double. Now, bear in mind that light intensity varies directly as the square of the amplitude. Thus, if the amplitude is double, the intensity is quadrupled. Okay, such as additive interference is called as constructive interference. So, this is constructive interference. मतलब अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो इंटेंसिटी तो 4 टाइम्स होगी, बिकॉज वी नो एम्पलीट्यूड द रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। सो दिस इज जस्ट अबाउट द constructive interference। The most important thing is in constructive interference the waves arrive at a point in same phase, means crest will overlap with crest, trough will overlap with trough, okay। Amplitude get double, that's why the intensity get quadruple, that's why we get the brighter point। Next, in destructive interference what will happen? The same, only the crest will overlap with the trough of the other wave, okay। If the crest of one wave coincide with the trough of other wave, the resultant amplitude is decreased, okay। The resultant amplitude will decrease और may even completely cancel, हो सकता है वो completely cancel भी हो जाए। ये देखिए यहाँ पे illustrate किया है। अब ये crest है लेकिन ये trough है, यहाँ पे trough है तो यहाँ फिर crest है, और जब यहाँ पे इनका इंटरफेरेंस हो रहा है तो हो सकता है एम्पलीट्यूड कैंसिल हो या तो फिर पूरा मतलब डिक्रीज हो या तो फिर कैंसिल हो। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव। नाउ डिस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है? वहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, वहां पे हमें डार्क पॉइंट मिलेगा, और डार्क पॉइंट मिलता है क्योंकि इंटेंसिटी वहां पे 0 हो जाती है। दिस रिजल्ट इज ड्रॉप इन इंटेंसिटी और इन केस ऑफ टोटल कैंसिलेशन और ब्लैकनेस। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें क्या मिल रहा है? ब्राइट पॉइंट, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिल रहा है डार्क पॉइंट, ओके। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। अब इससे क्या होगा? हमें एक पैटर्न मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा जो कि ये ऐसा दिखेगा। ये देखिए पैटर्न,
dark band, bright band, dark band. This is the pattern. This band are called as fringes. We can see it fringes. See, dark band, bright, dark, bright, dark, bright. So this is the pattern we get of light and dark bands. Okay. नाउ ये इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हमें करना है तो इसके लिए कुछ कंडीशन है. ऐसा नहीं कि दो लाइट यूज कर लिया और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया. नो, इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हमें स्टेडी करना है, या मतलब द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि जो कोहेरेंट सोर्सेस है, कोहेरेंट सोर्सेस होना चाहिए ना. सी, light should be monochromatic. Monochromatic means, mono means single, chromatic it means having same wavelength. Both the waves should be of same frequency. Both the waves should be travel in the same direction. The amplitude of the both waves should be nearly same or equal. Both the sources or slits should be very thin. Okay. The sources of the waves must be coherent, which means they emit the identical waves with constant phase difference. This is the most important thing here. Coherence means the identical waves with constant phase difference. Now, what is meant by identical? Identical means monochromatic, having same frequency and nearly equal amplitude. Two sources which emit waves of same frequency having constant phase difference independent of time are called as coherent sources. Now see, we have used this light source. Okay, this is the light source. Now see, the light is spreading in all possible direction, but what we have done, this light is emerging from this slit. Okay, this is the narrow slit. Now this will enter through this slit, and we will in this way we can get the two sources having monochromatic or identical waves. So this is the pattern. This is the simple structure of interference. Now see, Young's experiment. ये Young's experiment जो है, it is experimentally proved by the scientist Thomas Young was able to offer some very strong evidence to support the wave model of light. Okay, he placed a screen that has two slits cut into in the front of monochromatic or single color light. देखिए, यही है सोर्स है, स्लिट है, स्लिट को इतना छोटा रखा है कि यहाँ पे हमें दो सोर्सेस मिल रहे हैं और हमें एक पैटर्न मिल रहा है. The result of Young's double slit experiment. Now, why it is called as double slit? Because these are slits which are used double. Okay, two slits are used to produce the two sources. That's why it is called as double slit experiment. Should be very different if light is wave or a particle. Let's look at what the result would be the both situation and then see how the experiment supports the wave model. मतलब यंग्स एक्सपेरिमेंट ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इससे वेव नेचर ऑफ लाइट को एक फॉर्म फाउंडेशन मिला कि हाँ, वेव हैज अ वेव नेचर, सॉरी, लाइट हैज अ वेव नेचर. Now see, there are only two light rays that actually go through the slit. Slit means the two holes. But as soon as they pass through, they start to diffract. Okay, ये देखिए यहाँ पे दो स्लिट है यहाँ पे. They get started diffracted. Okay, remember diffraction is when the light passes through a small opening and start to spread out. This will happen from both opening. अब देखिए यहाँ से भी opening से ये diffraction होना start हो गया. Okay, and this is the monochromatic light which is passing through this two slits. Now notice that at some point the two sets of wave will meet crest to other spots, crest meet trough. मतलब एक तो crest मिलेगा, या तो फिर crest trough मिलेगा, या तो फिर trough भी मिल सकता है. Where crest meets crest, there will be constructive interference. The waves will make it into viewing screen as bright spot. जहाँ पे bright point है, समझ लेना वहाँ पे crest या trough overlap हुआ है. Where crest meet trough,
मतलब या trough meets crest, there will be the destructive inference that cancel each other. A black spot will appear on the screen. When this experiment is performed, we actually see this. See, monochromatic light entering through slits, they get diffract and they get interfere, and in this way we get the pattern on the viewing screen. Now, when you set up this sort of apparatus, there is actually a way for you to calculate where the bright lines, मतलब बैंड्स तो मिलने वाले हैं फॉर श्योर, लेकिन कौन सा बैंड कहाँ पे, द फ्रिंजेस, वी कॉल्ड इट एज फ्रिंजेस, वो कहाँ पे मिलेंगे. देयर इज ऑलवेज अ मिडल लाइन विच इज ब्राइटेस्ट, मतलब ऐसा समझिए जो रेफरेंस पॉइंट है आपका, जो मिडल लाइन है, इट विल बी ब्राइटेस्ट ऑलवेज. वी कॉल इट एज अ सेंट्रल, दिस इज द सेंट्रल. सपोज अब इमेजिन करिए आपका सेंट्रल फ्रिंज है, दैट सेंट्रल फ्रिंज बी ऑलवेज ब्राइट. ओके, उसको हम 0 से इंडिकेट करेंगे. In this formula we will use, there is a variable n, that is the count of how many bright fringes you are away from the central fringe. मतलब n जो है अभी सेंट्रल फ्रिंज, n क्या होगा सेंट्रल फ्रिंज पे, 0 होगा. अगर आप द फ्रिंज टू आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज हैज एन ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर है, अगर आप यहाँ पे हो तो n विल बी 0, अगर आप यहाँ पे हो तो n विल बी 1, अगेन आप यहाँ पे हो तो n विल बी 1, अगेन आप यहाँ पे हो तो n will be 4. Means n is the order from the position of central fringe. Okay, so and so on, as shown in the figure. Now see, lambda is the wavelength of light used. Okay, now it is in meter. X is the distance from central fringe. अब ऐसा समझिए ये हमारा सेंट्रल फ्रिंज है n इक्वल टू 0, और ये n इक्वल टू 2 का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक x है, और ये जो कैपिटल L है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट and this screen. Okay, this L should be very much large as compared to this D. The condition is, now see, this D is, small d is the distance between slits. Again it will be in meter. अब देखिए ये सोर्स है हमारा जिसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, एंड द वेव इज अलाउिंग टू एंटर फ्रॉम दिस स्लिट्स which has the distance of d. L is the distance between this slit and this viewing screen. Okay, this should be very much greater than this. Now अगर हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, अगर ये लाइट यूज किया है इसकी वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, x इंटू डी अपॉन n इंटू l. ओके, n इज द ऑर्डर हियर, ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज. अब समझिए कि मुझे इस ऑर्डर के लिए वेवलेंथ निकालनी है, देन n विल बी 2, l will be the distance, it will be constant, this d will be also constant, and this distance will be vary. Okay, now let's move towards, this is the experimental setup for Young's double slit experiment. हो सकता है आपको ये 2 मार्क्स के लिए डायग्राम पूछी जा सकती है. तो these are the rays, here is the source, S1 and S2 are the 2 slits, interference pattern, then minimum, maximum, minimum, maximum, these are the intensity points. This is the actual interference pattern, and now this is the viewing screen. Now see, we'll get this kind of pattern. Okay, so this is the experimental setup for Young's double slit experiment. Now the dark destructive interference. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्ट कैसे वेव इंटरफेयर कर रही है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये क्रेस्ट है, और ये क्या है, यहाँ पे ट्रफ है. मतलब क्या हो रहा है, दे आर आउट ऑफ फेज, मतलब यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा वो होगा डार्क पॉइंट. अब यहाँ पे देखिए लैम्डा है इसकी वेवलेंथ और इसकी भी वेवलेंथ लैम्डा है, लेकिन ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखिए ये क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, सिर्फ थोड़ा एम्पलीट्यूड इनका कम है, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे हमें ब्राइट पॉइंट मिलेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, now this figure shows how to determine the path
length difference for the wave traveling from two slits to a common point on a screen. Now see, if the screen is large distance away compared with the distance between the slits, obviously ये जो L है वो तो बहुत large होगा as compared to this. Then the angle theta between the path and the line from the slit to the screen is nearly the same for each path. अब देखिए यहाँ पे ये जो है दिस इज द एंगल, ये जो है यहाँ पे हमें जो पैटर्न मिलेगा, लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो हमें कैसे मिलेगा? द डिफरेंस बिटवीन द पाथ्स इज शोन इन द फिगर. सिंपल trigonometry shows it to be d sin theta, where d is the distance between the two slits. To obtain the constructive interference for a double slit, अगर हमें डबल स्लिट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? The path length difference must be an integral multiple of the wavelength, that is d sin theta should be equal to m lambda. Means m stands for the integral multiple of lambda, then we will get the constructive interference. But if d sin theta is equal to m plus half of lambda, for m again the integral multiplier, this condition only difference with this. Now see, m plus half of lambda, then the constructive pattern, the destructive pattern will get. Now see, this is the distance, the waves are coming here. Okay, the interference pattern for a double slit has an intensity that falls off with angle. Now this photograph shows multiple bright and dark lines of fringes formed by line passing through the double slit. अब देखिए यहाँ पे कहीं का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम होता जा रहा है यहाँ पे. Now double slit experiment is having some conditions. अगर वो condition fulfill नहीं होते, then we will not get the steady interference pattern. Now two sources of light should be coherent, means in same phase, then monochromatic, then same amplitude. The separation between two slits must be small in comparison to the distance between the plane containing slit and observing screen. मतलब L should be very much greater than small d. The two slits should be narrow. The two waves should be in the same state of polarization. So this is about the interference, the constructive interference and the destructive interference. Here we need to understand that the central fringe, the order and the condition which is given for the constructive interference, the path difference is integral multiple of lambda for constructive interference, and the path difference for destructive interference is m plus half of lambda. So these two things you need to understand. So in this way we have done with this wave optics, in that we have completed the polarization and interference here. So some of the questions you need to understand that can be asked in the question. Okay, so we'll end here and we'll meet in the next video. Till then, goodbye and take care.